Good morning, class. Today we are looking for a new topic, otitis media, and start the new unit, that is Unit 1, Nursing Management of Patient with ENT Disorder. So firstly, I will give a short description regarding the ear infection. What is an ear infection? It is a common term which is used and known medically as acute otitis media, a sudden infection in the middle ear, which is a space behind the eardrum. So ear infection, it is also known as otitis media, and it is inflammation of the middle ear, and it is caused by the bacterial infection and abnormal bacterial growth inside the tympanic cavity. Ear infection, it happens when the bacteria or virus get into the middle ear, which is the space behind the eardrum, and when someone has an ear infection, then middle ear fill with the pus, and pus pushes the eardrum, and which can be very, very painful for the patient. So it is an inflammation of the middle ear and it is caused by any bacterial infection or in any other infection, for example respiratory infection or cold or sore throat. Next type of otitis media, there are three types. First one is acute otitis media, second one is otitis media with effusion, and third one is chronic otitis media with effusion. First one is acute otitis media, it is called AOM. The middle ear infection occurs abruptly, causing the swelling and redness in the middle ear, and where the fluid and mucus become trapped inside the ear. Trapped means होता है फंस जाना या वहाँ जाल में फंसना या किसी भी जगह पर रुक जाना. So here the fluid and mucus become trapped inside the ear, which cause fever, ear pain and hearing loss. Next one is otitis media with effusion. In this, fluid and mucus continue to accumulate in the middle ear after initial infection subside. Then patient experience a feeling of fullness in the ear and hearing loss. Next one is chronic otitis media with effusion. In this, fluid remains in the middle ear for a prolonged period and returns again and again even there is no infection, and it may result in difficulty in fighting the new infection and resulting in hearing loss. So first जो हमने acute otitis media देखा, इसमें क्या है, पेशेंट कि अगर हम मिडिल ईयर में देखें तो यहाँ पे हमको फ्लूइड का एक्यूमुलेशन मिलेगा, साथ ही साथ म्यूकस भी मिलेगा, एंड पेशेंट हैव फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन एंड पेन एंड हियरिंग लॉस. सेकेंड जो हमने देखा ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूज़न, इसमें क्या है, जो फ्लूइड एंड म्यूकस जो है वो मिडिल ईयर में एक्यूमुलेट होंगे, बट आफ्टर एन इनिशियल इन्फेक्शन सबसाइड, जब जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सबसाइड हो जाएगा. एंड पेशेंट एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, है ना, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि मेरे ईयर्स में कुछ भरा हुआ है, जैसे कि कभी कभी ईयर्स में हमारे वाटर चला जाता है ना बाथिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमको लगता है कि हमारे ईयर्स फुल हो गए हैं, तो ऐसा ही पेशेंट को फील होगा. थर्ड वन इज क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूज़न. इसमें क्या होगा, फ्लूइड जो है वो मिडिल ईयर में प्रोलॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे पड़ा रहेगा, और इन्फेक्शन बार बार रिटर्न होता रहेगा, पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को न्यू इन्फेक्शन जो भी पेशेंट को होगा उससे जो पर्सन है ईजिली फाइट नहीं कर पाएगा, और सेकंड चीज़ क्या है, हियरिंग लॉस भी होगा. सो दिस इज़ द थ्री टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया. Here look at this picture. This is the picture of acute otitis media. In this is the normal picture of middle ear canal, and second one is it is acute otitis media. Here the bulging of tympanic membrane, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो tympanic membrane है वो bulge हो गई है, and here tympanic membrane is in normal. So this is the difference between the normal and infected middle ear. And the most common bacterial agent that cause infection inside the middle ear is Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza.
Next, in this picture, this is the otitis media with effusion, either chronic, जो कि हमने यहाँ पे देखा था. तो इफ्यूज़न में यहाँ दो टाइप्स हैं, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूज़न एंड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूज़न. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ otitis media with effusion. So this is the normal ear where no fluid accumulated inside the middle ear. Here the some fluid and air also accumulate in the ear. And next one is effusion. In third stage there is fluid accumulate in the middle ear. Next is causes of fluid accumulation in the ear. So first one is allergy, second one is congestion, third one is enlarged sinus tissue, fourth one is chemical irritants, then damage of auditory tubes, next one is rapid air changes, and last one is oral abnormalities. So I will deal it one by one. First one is allergic. Due to any type of allergic reaction, it also cause infection and inflammation in the middle ear, and that cause fluid accumulation inside the ear. Next one is nasal congestion. Any kind of congestion which is from a cold virus, any type of similar infection like respiratory tract infection, or even during the pregnancy there may be also chance of irritation of middle ear, and that result in infection of middle ear. Next one is enlarged sinus tissue, nasal polyps, tonsil, adenoids, or other growth which block the auditory tube. It is usually caused by the chronic sinusitis. Next one is exposure to chemical irritants, especially cigarette smoking. Next one is damage to auditory tube, which is from the radiation for head and neck cancer or any previous surgery which may transect the auditory tube, which is very rare, but it also trigger the condition of otitis media. And next one is rapid air pressure, a condition that is barotrauma to the ears, which is rapid changes in the air pressure such as it arising when the flying in the airplane or scuba diving. So it is also cause irritation, infection and inflammation as well as fluid accumulation in the middle ear. And next one is oral abnormality. It is mainly associated with the Down syndrome or sometime associated with the cleft palate. So these all are the causes of fluid accumulation in the ear. Another cause, first that is immature immune system. Because of immature immune system, person is more prone to get ear infection. Next one is genetic predisposition. Sometime if patient having any genetic or family history. Next one is anatomic abnormality due to any structural abnormality of ear canal. Sometimes it also cause fluid accumulation in the ear canal. Next one is physiological dysfunction. Next one is bacterial pathogen. Due to bacterial infection, it also cause effusion of fluid in the middle ear. And last one is because of defective or wrong method of breastfeeding, wrong method of infant feeding, that also lead to otitis media. And next, some another risk factors are here. First one is age. Next one is cold, then allergies, chronic illness, seasonal factors, poor air quality. Here spelling mistake, this is the quality, poor air quality. Next one is adenoid swelling. So first one is age. Infants and young children mostly between the 6 months of age and 2 years are a greater risk for ear infection. Then second one is cold. Cold often increase the chance of getting any ear infection, especially otitis media, any type of allergic reaction, because it causes inflammation and swelling of the nasal passages, especially in case of upper respiratory tract, and which can enlarge the adenoid gland. And because of the adenoid gland swelling, it can cause
it can cause the infection and infection and also block the eustachian tube and swelling, and that leads to middle ear inflammation. And next one is poor air quality. Due to poor air quality, for example exposure to tobacco smoke or high level of air pollution, it can also increase the chance of getting otitis media or ear infection. Next one is pathophysiology. Due to all the etiological factor, for example age, family history, allergic reaction, seasonal factor, abnormalities of eustachian tube, any physiological dysfunction or any genetic or family history of the patient, it may result in the malfunction of eustachian tube, a canal which link the middle ear with the throat area. The eustachian tube, it helps to equalize the pressure between the ear and middle ear. जो eustachian जो ट्यूब्स है वो क्या करता है, जो हमारे आउटर ईयर हैं और मिडिल ईयर दोनों के बीच प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है. जब ये ट्यूब प्रॉपरली वर्क नहीं करता है देन इट प्रिवेंट द नॉर्मल ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द मिडिल ईयर. लेकिन अगर इस ट्यूब में किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट आता है, तो ये जो ट्यूब है प्रॉपरली ये ड्रेन नहीं करता है फ्लूइड को फ्रॉम द मिडिल ईयर. इसकी वजह से जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है जस्ट बिहाइंड द ईयर ड्रम. एंड व्हेन दिस फ्लूइड कैन नॉट ड्रेन इट अलाउ फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस. और ये फ्लूइड अगर वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, अगर वहीं पे रुक जाता है, देन इट कॉज growth of bacteria and virus in the ear that leads to ear infection or infection of middle ear, that is called otitis media. And a cold or allergy which can lead to swelling, congestion of lining of nose, throat, eustachian tube. These all are the factors which prevent the normal flow of fluid and that result in a ओटाइटिस मीडिया. सो फर्स्टली यहाँ पे क्या होता है, जो इस किसी भी तरह के इन्फेक्शंस का रीज़न हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, सीजनल एलर्जी हो सकती है ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू एनी अनदर इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ये सभी रीज़न से क्या हो सकता है, जो मिडिल ईयर जो कैनाल है वो इरिटेट होती है, देन इट कॉज इन्फ्लामेशन के बाद वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है. साथ ही साथ अगर यूस्टेचियन जो ट्यूब है जो कि आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती है, अगर वो डिसफंक्शनल हो गई है, यानी कि उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, देन इट doesn't drain the fluid from the middle ear, and because of that the fluid is accumulated just behind the eardrum, and it gives a proper environment for the bacterial and viral growth, and that leads to otitis media. Next one is clinical features. The clinical features of otitis media, first one is difficulty in sleeping because of ear irritation. Next one is tugging, that is pull something hard or very quickly. So tugging or pulling at one or both ear, there is feeling of fullness inside the ears, fever due to infection present in the body, fluid drainage from the ear, that is ear discharges, loss of balance because of the imbalance of pressure between the ear canal because of dysfunction of eustachian canal or tube. Next one is loss of balance. यहाँ पे पेशेंट का जो बैलेंस लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि यूस्टेचियन जो कैनाल है वो क्या करती है, यूस्टेचियन जो कैनाल है वो प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है बिटवीन द ईयर कैनाल, बिटवीन द आउटर ईयर एंड द मिडिल ईयर. तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी वहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो जो साउंड वेव्स जो ट्रांसफ़र हो रही है उनमें क्या हो रहा है, प्रॉपर वो साउंड वेव ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल करेक्टली वे में नहीं हो रहा है, एंड दैट डिस्टर्ब the hearing pathway, and that result in loss of balance and hearing difficulty. Patient feel ear pain due to inflammation of the middle ear, and that continuously arise the pressure in the nerve pathway. Next one is otalgia. It is the ear pain or ear ache. Next one is otorohia. It is the drainage from the ear inner canal. Next one is unusual irritability due to inflammation and irritation in the middle ear.
Diagnosis. So firstly we will take the medical history, genetic history, family history of the patient, take the history regarding any type of seasonal allergy or any type of chronic illness like HIV or any long term illness, and if patient having adenine swelling. So this is the history. Next we will perform the physical examination. In physical examination we will perform the examination of ear. In this we will perform the hearing test, which is performed for those who have frequent ear infection periodically. Next we will done the test that is called tympanometry. It is a test that helps to find out how middle ear is functioning, and it also has to detect any changes in the pressure which is found abnormal in case of otitis media. And next one is otoscope examination, in which we use otoscope, which is an instrument that allow physician to see inside the ear, and a pneumatic otoscope blow a puff of air into the air to test the eardrum मूवमेंट. इसमें हम क्या करते हैं, ऑटोस्कोप में हम इसको ईयर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, देन हम इसमें ब्लो अ पफ ऑफ एयर, यानी कि हम उसमें एक फूंक मारते हैं. ब्लो द एयर का मतलब होता है जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भरने के लिए क्या करते हैं, फूंकते हैं, उसके अंदर जो एयर को हम क्या करते हैं, ब्लो द एयर, यानी कि फूंकते हैं तो उसके अंदर एयर भर जाती है. तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जो एयर ड्रम्स है उसका मूवमेंट क्या है साउंड्स के लिए. Next, another diagnosis, that is acoustic reflectometry. This test measure how much sound is reflected back from the eardrum. Already यहाँ पे eardrum के पीछे बहुत सारा fluid accumulated है, तो इसमें हम ये चीज़ find out करते हैं कि कितना जो sound है वो वापस reflect होके आ रहा है from the eardrum. And indirect measures of fluid in the middle ear and the eardrum absorb most of the sound. However, more pressure there is from the fluid in the middle ear, more sound the eardrum will reflect. मैक्सिमम जो साउंड है वो क्या रहता है, ईयर ड्रम एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी फ्लूइड फिल्ड है मिडिल ईयर में, इसकी वजह से जो ईयर ड्रम है वो मोर साउंड क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. Tympanocentesis. In this procedure the doctor use a teeny probe that pieces the eardrum to drain the fluid from the middle ear. Tympanocentesis में हम क्या करते हैं, एक टीनी प्रोब के हेल्प से हम जो जितना भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको जो है वो ड्रेन करते हैं. प्रोसीजर कॉल्ड tympanocentesis. Then it is the fluid is tested for the virus and bacteria, and it is helpful if the infection which is not responded well to the प्रीवियस ट्रीटमेंट. अगर कोई हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं और पेशेंट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इससे हमको हेल्प मिलती है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, जो भी हमने थेराप्यूटिक रेजिमेंट जो भी अप्लाई किया है, अगर पेशेंट उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमको कोई दूसरा ऑप्शन सोचना चाहिए, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा. तो इसके लिए हेल्प करता है स्पेशली इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. व्हाट अ डायग्नोसिस मीन्स. जो भी अभी हमने डायग्नोसिस परफॉर्म किया तो 3 अलग अलग फॉर्म में हम देखेंगे. सो फर्स्ट, इन केस ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, डॉक्टर लाइकली मेक दिस डायग्नोसिस इफ ही और सी signs of fluid in the middle ear and there are signs and symptoms of an infection, and if symptom started relatively suddenly. acute otitis media डॉक्टर कब डायग्नोस करते हैं, जब जो पर्सन है उसको सडनली कोई इन्फेक्शन हुआ है और उसको ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. एंड ऑल्सो देयर इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनसाइड द मिडिल ईयर. सेकेंड, इन केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन में क्या होगा, ऑलरेडी फाउंड द एविडेंस ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर बट देयर इज नो सिम्टम और नो साइन ऑफ इन्फेक्शन. सेकेंड जो केस है जिसमें ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन है, तो जरूरी नहीं कि इसमें पेशेंट को किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, लेकिन फ्लूइड का एक्यूमुलेशन मिडिल ईयर में होगा. Third one is chronic suppurative otitis media. If doctor make a diagnosis of chronic suppurative otitis media, he or she has found that a long-term ear infection resulted in tearing of the eardrum. इसका मतलब क्या है, ये जो डायग्नोसिस है पेशेंट जो डॉक्टर से कब डायग्नोस करते हैं, जब इस मैक्सिमम क्या होता है, इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म कोई ईयर इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ईयर जो ड्रम है उसमें टीयरिंग हो जाती है, टोन हो जाता है ईयर ड्रम, एंड दैट रिजल्ट इन
pus draining from the ear and also cause blockage and inflammation of the middle ear. Next we will talk about the management, how we will manage the patient with the otitis media. So first aim of treatment, that is managing the pain. So we will give the pain medication, and for this we will give the over counter drug, for example acetaminophen, ibuprofen, to relieve the pain and discomfort. Next we will give the anesthetic drops. This is used to relieve the pain as long as the eardrum doesn't have a hole or tear in it. Example of anesthetic drop like lidocaine 2% or benzocaine to provide rapid pain relief. Next one is antibiotic therapy. After an initial observation period, doctors may prescribe the antibiotic treatment for the ear infection. For example, ofloxacin, ciprofloxacin, dexamethasone. So these all are the example of antibiotic therapy. One surgical treatment is there, that is called myringotomy, and in this tympanostomy tube placement, a surgeon create a teeny hole in the eardrum that enables him और हर टू सक्शन द फ्लूइड फ्रॉम द मिडिल ईयर. इसमें सर्जन्स क्या करते हैं, एक टीनी होल क्रिएट करते हैं ईयर ड्रम में, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है जो वहाँ पे एक्यूमुलेट है जस्ट बिहाइंड द ईयर ड्रम, उसको सक्शन कर सके फ्रॉम द मिडिल ईयर. एंड अ टीनी ट्यूब दैट इज कॉल्ड टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब, इट इज प्लेस्ड इन द ओपनिंग टू हेल्प टू वेंटिलेट द मिडिल ईयर एंड प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ मोर फ्लूइड. और इस हम वहाँ पे एक टीनी टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब है उसको प्लेस करते हैं इन द ओपनिंग जो हमने होल किया है, जिससे कि वहाँ पे जो मिडिल ईयर हो वेंटिलेट हो सके विथ फ्रॉम द एयर, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ मोर फ्लूइड और मोर फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनसाइड द मिडिल ईयर. एंड वन अनदर सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज adenoidectomy, that is surgery to remove the adenoid, which is because they have become swollen or enlarged because of any infection and allergy, and that cause inflammation and infection in the middle ear. Next one is complication. So first complication, that is infection in the other parts of the head because of there is untreated infection or infection which does not respond well to treatment. It can easily spread to near organ and near tissues, like infection of mastoid, infection of ear, and this infection can result in damage of the bones and also cause the formation of pus filled cyst. Next one is permanent hearing loss of hearing, because the mild hearing loss that comes and goes is fairly common with the ear infection, but it usually gets better after an infection clear. But if the ear infection that happens again and again, and fluid collection in the middle ear happens in again, then it leads to more significant hearing loss, and if the more significant loss is for the long time, then it leads to gradual hearing loss. Next one is problem with speech and language development. If hearing is temporary or permanently impaired in the infant and toddlers, then they may experience delay in speech production and also delay in language skill. Next one is tearing of eardrum because of repeat infection of ear. Next is nursing management. So firstly we will assess the child or patient with otitis media, and in this assessment part we will perform the physical examination with the help of otoscope. Next one, we will take the history regarding the medical history regarding family, regarding any genetic disease, regarding any seasonal factor, allergy, any medications.